Welcome to you in 15th lecture of haloalkanes and haloarenes. आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन्स. हैलोएल्केन्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले पिछले वीडियोस में. वी स्टडी फॉर द हैलोएरीन्स. क्लियर? First thing, nucleophilic substitution in haloarenes is much difficult compared to haloalkanes. Nucleophilic substitution is very easy, very common in haloalkanes, but rare in haloarenes. Haloarenes में बहुत सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं. तो इसका रीजन क्या है? What is the cause? What is the cause कि haloarenes में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट क्यों है कंपेयर टू द haloalkanes? क्लियर? आइए उस पे देखिए क्या रीजंस है हमारे पास. द रीजन ऑफ nucleophilic substitution is very slow in haloarenes compared to haloalkanes. There are many reasons. The important reason, the first very important reason is resonance in haloarenes. Resonance in haloarenes. The first reason is resonance in haloarenes. Due to resonance, it is showed that nucleophilic substitutions are difficult, but electrophilic substitutions are very easy in haloarenes. See here, this is one example. This is, suppose haloarene X ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी वन. Suppose we taken chlorine. Clear? In halogen atoms, 3 lone pairs are present in this way. Clear? This is chlorobenzene. Their chlorine is rich in electrons due to presence of 3 electron pairs. So this electron pair is slightly moved towards benzene ring. Then what happens? There. When this chlorine moves toward this carbon, then the pi bond of this carbon moves towards this. Because carbon has 4 valency and all 4 valencies are engaged. सभी 4 valency engaged हैं. तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगी. ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स ऑन दिस कार्बन. Due to this, they are developed negative charge. They are developed negative charge on ortho position, and positive charge developed on this carbon, which is balanced by this electron pair. This electron pair makes a double bond. इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म. 1 electron of this chlorine and
one is transferred on this carbon, both makes double bond. Due to transfer of one electron to this carbon, their positive charge is developed on this chlorine atom. Clear? And this CX bond, CCl bond acquires some double bond character. Now their resonance is started. This electron pair moves towards another carbon atom in this way. This electron pair moves toward this carbon. But on this carbon, all four valences are engaged. 1, 2, 3 and 1 with hydrogen. Then again pi electron moves toward this carbon. Then what happens? Negative charge is developed on this carbon. And a positive charge is developed on this carbon. Where one electron from this transfer on this carbon and make double bond. And both carbon becomes neutral. This is resonance condition. In the same way, this electron pair moves toward this side and pi electron again on this carbon. And then what happens when this pi electron pair moves on this carbon? Negative charge is developed on this carbon atom, on the ortho position. And from para position, one electron goes on this carbon, positively charged carbon atom, and makes a double bond. And this is converted into this. ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है. And again this goes on this electron pair goes on this carbon. Then again it shifts on chlorine and finally it comes on this position. When this pi electron pair goes on this chlorine, it comes in this condition and positive charge diminished. And when this electron goes on this portion, then it makes pi bond in this way. So they are due to resonance. This carbon and chlorine bond acquires some double bond character. And in double bond, you know, their breaking of double bond is much difficult compared to single bond. In the haloalkanes, like this is single bond. Breaking up this bond is easy compared to this bond. Clear? This bond की breaking मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्योंकि रेजोनेंस की बात हो गई. Now you go another reason also. The hybridization, second condition. You know, in haloarenes, this carbon has sp2 hybridization, while in the haloalkanes, this carbon has
sp3 hybridization. When you compare sp2 and sp3, then sp2 has more s character. इसके पास s character ज्यादा है. यहाँ s character 25% है, but they are 33%. And more s character, more electronegativity. Clear? So in this bond, this carbon is more electronegative compared to it. और जहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा हो जाती है, वहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है. तो CS bond length, this bond length is 169 picometer, and their bond length is 177 picometer. So due to sp2 hybridization of haloarenes, CX bond length is shorter compared to haloalkanes. Clear? And breaking of this bond due to shorter wavelength is difficult compared to it. So nucleophilic additions कम हो जाते हैं यहाँ पर. Next is the stability of phenyl cation. Phenyl cation. यदि यहां से हम लोग यदि बॉन्ड ब्रेक हो हमारे पास में, तो एक्चुअली है कि क्लोराइड आयन बनेगा और ये फिनाइल कैटायन बनेगा. दिस इज, बट दिस फिनाइल कैटायन इज highly unstable. Highly unstable. So due to its unstable nature, this bond is not broken easily. Clear? और जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो SN1 रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. Clear? Due to this cause, SN1 reaction is ruled out. इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. Clear? तो केवल SN2 ही पॉसिबल है, SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है. Now we go. Next cause, repulsion between anions. हम लोगों ने देखा था अभी रेजोनेंस में, यहां पर ये पॉजिटिव कैरेक्टर था इसके पास ड्यू टू दिस, और यहां मैंने बताया था कि आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर था और नेगेटिव चार्ज था. और बड़ी क्लियर से बात है, जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दिस इज, सो दिस नेगेटिव चार्ज इन ऑर्थो पैरा पोजीशन रिपेल टू इट, यहां पर रिपल्सन फोर्स होगा. ठीक, तो ये रिपल्सन फोर्स न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के अटैक को रोकने की कोशिश करेगा. इस कॉज के कारण भी जो है यहां पर रिपल्सन फोर्स के कारण जो है ये कंडीशन नहीं हो पाती, जल्दी अटैक नहीं हो पाता है. क्लियर? नेक्स्ट है पोलैरिटी.
आपको मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नेचर, more electronegative in nature. So this bond becomes polar and their moment is developed 1.7 d. This is moment. In the case of there, this is also polar and their moment is developed 1.94 dBi. Clear? It becomes more polar. It is less polar due to resonance. Clear? ये हमारे पास में less polar है, ठीक? And less polarity have greater bond strength. ये ध्यान रखें, जितनी हायर पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और लेस पोलैरिटी का मतलब है देयर ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इजीली। इस कॉज के कारण भी जो है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने बताया आपसे कि क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव तो करता है, बट यू नो क्लोरीन शोज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, तो इलेक्ट्रॉन को फिर खींचने की कोशिश भी करता है, ठीक? तो इसके कारण भी जो है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हमने बताया जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल भी हैं, उसमें मैं बताया SN1 इज रूल्ड आउट, वो तो पॉसिबल ही नहीं। SN2 के कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। There one is the action of ammonia. Really, chlorobenzene reacts with ammonia in presence of cuprous oxide at high temperature, high pressure. In this way, to form aniline. This reaction occurs at 475 Kelvin and about 60 atmosphere, and it gives aniline, and the Cu goes with Cl, cuprous chloride and water molecule in this way. There another nucleophilic substitution in haloarenes, action of copper cyanide. In presence of DMF, chlorobenzene reacts with, or any haloarene reacts with copper cyanide to form cyanobenzene or phenyl cyanide. This DMF is dimethyl formamide. Formamide. It is shortly called DMF. This forms cyanobenzene. This is
This cyanobenzene is very useful for conversion of haloarine to other products like this. When this is partially hydrolyzed in presence of concentrated HCl, then it forms benzamide. Benzamide. And when it is completely hydrolyzed in presence of dilute HCl, then it forms benzoic acid. Well, on reduction, it gives benzylamine. In this way, in the presence of lithium aluminum hydride, it is reduced to give benzylamine. This is benzamide, this is benzylamine. क्लियर? और एनिलीन का फॉर्मूला क्या था? C6H5NH2, जो अमोनिया से रिएक्शन में बन रहा है. And next is the action of an NH2 oblique liquid ammonia. And NH2 is called sodamide. Sodamide. ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन रन करता है अबाउट 200 केल्विन के आसपास. This Na goes with Cl and it forms aniline. Clear? Now we go action of aqueous NaOH or KOH. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आप ले सकते हैं. You react with NaOH. This reaction occurs in two steps. First step NaOH से और सेकेंड में हाइड्रोनियम आयन ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे. Then it forms phenol. Clear? Really reaction occurs in two steps in this way. First, NaOH reacts at 623 Kelvin and 300 atmosphere to form sodium phenoxide. This is the first step reaction. It forms sodium phenoxide, which further reacts with dilute HCl to form phenol in this. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है. What is the important thing? इस रिएक्शन में जो है यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन पे हो
या मेटा पोजीशन पे हो, then a reaction becomes fast. When this reaction becomes fast. You know why? NO2 is the electron withdrawing group. In the presence of it, the electron pair of chlorine is fastly moves towards benzene ring. फास्टली मूव करेगा और रेजोनेंस कंडीशन अधिक डेवलप करेगा। ऐसे में हमारे पास में फास्टली यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और अटैक हो जाएगा। क्लियर? दिस अटैक विल बी इन दिस वे। Then OH minus attack, then what happens? This is a positive carbon, this is a negative. Due to polarity, it attacks on this position, where when chlorine and OH is developed, and the electron pair moves in the benzene ring in this way. There comes negative charge. And this again moves towards it and into resonance, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्डिंग आ जाएगा। Again, due to resonance, it moves towards and there are pi electron in this way. So it gives this condition there. The pi electron comes on this position. You have to develop it. Again, due to resonance, that this electron pair goes on this carbon. Clear? ये मूव होगा हमारे पास में और उस समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा and it forms in easy way. This is an chloride ion is removed. In the presence of NO2 in the earth or meta position, movement of electron from chlorine becomes rapid and reaction becomes easy. Clear? आगे के बहुत से रिएक्शंस अभी हैलोजेंस में और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन एंड अदर रिएक्शंस, उनके लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर इट।